Something's changed. See His glory. Feels like heaven on earth. ನನ್ನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಸುನೀತಾ ರೀ, ಯಾವ ಊರಮ್ಮ ನಿಮ್ದು? ಹಣಕುಣಿ ರೀ. ಏನಾಗಿತ್ತು? ಯಾವ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಈ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. 5 ವರ್ಷನಿಂದ ರೀ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ? ಹಾಂ ರೀ. ಸರಿ, ಆ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಮ್ಮ. ಆ ಕಿವಿ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬೆರಳಿಟ್ಕೊ ಮುಚ್ಕೊ. ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ? ಹಾಂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ? ಹಾಂ ರೀ. ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ? ಕೇಳತ್ತದ ರೀ. ಹಾಂ ಕೇಳ ಹೊಂಟದ ರೀ. ಹಾಂ ಕೇಳ ಹೊಂಟದ ರೀ. ಕೇಳ ಹೊಂಟದ ರೀ. ಹಾಂ ಕೇಳ ಹೊಂಟದ ರೀ. ಹಾಂ ಕೇಳ ಹೊಂಟದ ರೀ. ಕೇಳತ್ತದ ರೀ. Hallelujah. Lord Jesus, thank you for healing her. You healed her. I give you glory in Jesus' name. Amen. ಹೋಗಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಸರ್ ಜೈಕರ್. ಜೈಕರ್. ಯಾವ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತ ಜೈಕರ್? ಏನ್ರಿ? ಯಾವ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? ನನಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ಕೇಳ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಯದ. ಮತ್ತು ಕೇಳ ಹೊಂಟದ ಕಿವಿ. Hallelujah. ಈ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕೇಳ್ತತಾ? ಹಾಂ ಕೇಳಿಸ್ತದ ಸರ್. ಕೇಳ್ತತಾ? ಹಾಂ ಕೇಳಿಸ್ತದ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತದ ಸರ್. ಕೇಳ್ತತಾ? ಕೇಳಿಸ್ಲತ್ತದ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ಲತ್ತದ ಸರ್. ಹೌದು ಕೇಳಿಸ್ಲತ್ತದ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ಲತ್ತದ ಸರ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. Lord Jesus, thank you for healing my brother. I bless him in Jesus' name. Amen. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಸಂಗೀತ. ಯಾವ ಊರಮ್ಮ ನಿಂದು? ನಂದ್ರಿ ಇದೇ ಊರಿ ಹುಟ್ಟಿಂದರು ಊರಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಯಾವ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಿದಿಲ್ಲ? ಕಿದರಿ ಕಿವಿ ರೀ. ಪೈಲಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗಿರ್ಲಿ ಸೋರ್ತಿತ್ತು ರೀ. ಈಗ ಥೋಡೆ ದಿನ ಆಯ್ತು ರೀ, ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ. ಇದು ಕಿವಿಗೆ ಏನಾರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಲತ್ತ. ಯಾವ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಿದಿಲ್ಲ? ಇದು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಸರಿ, ಆ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಯಾಕೆ ತಿರುಗಿಬಿಡು. ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ? ಹಾಂ ರೀ. ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ? ಹ್ಞೂ ರೀ. 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 ಕೋಟಿ ಸಾತ್ರ ರೀ ತಂದು. ಹ್ಞೂ ರೀ. Lord, I thank you for healing her. You healed her. I bless her in Jesus' name. Amen. ಹೋಗ್ಬಮ್ಮ. ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೈಬಲ್ನಾಗ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಯೇಸುಗಾಗಿ ನಾವು. Hallelujah. All will go well with you and you will live long. आपके साथ सब कुछ भला होगा और आप लंबा जीवन Why? जिएंगे। Why? क्यों? Because when you honor your father and mother, जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, you bringing a culture of the kingdom. तो आप उस राज्य का जो है व्यवहार है उसको लेकर आते हैं। Raj kingdom culture. और आप उस राज्य का संस्कृति, राज्य की संस्कृति आप लेकर आते हैं। kingdom culture is honor. और राज्य की जो संस्कृति है वो है आदर। I can tolerate any mistakes anybody does. और मैं किसी भी प्रकार की गलतियों को सहन कर सकता हूँ। I don't care how many mistakes you make. All your mistakes are your actions. और मैं परवाह नहीं करता कि आपने कितनी भी गलतियां करी हो, वो सिर्फ आपका एक एक्शन है। I forgive it. मैं आपको माफ कर दूंगा। But dishonor लेकिन अनादर is not action. लेकिन वो आपका सिर्फ काम नहीं है, It's attitude. वो आपका व्यवहार है। Dangerous. बहुत खतरनाक है। Zero tolerance. उसके लिए कोई Anybody please find a way out of the church. कोई भी इस तरह से अनादर करता है तो आप जा सकते You हैं। can leave the church. आप चर्च छोड़ के जा सकते Why? हैं। Dishonor is dangerous. क्योंकि अनादर करना बहुत खतरनाक When you है। honor, जब आप आदर करते all हैं will go with you. तो All will go well with you. सब कुछ भला होगा। When you dishonor, जब आप अनादर करेंगे nothing goes right with you. तो आपके साथ कुछ भी भला नहीं When you होगा। honor, जब आप आदर करेंगे you live long. तो आप लंबे जीवन When you जिएंगे। dishonor, जब आप अनादर you will करेंगे die soon. तो आप जल्दी मर जाएंगे। That's the word. ये वचन है। I didn't hear loud amen. Yes, amen. I need a loud amen. Amen. Understand, children. बच्चों Your father, when you see your father in the natural, see the spiritual. जब आप अपने पिता को स्वाभाविक में देखते हैं तो आप उसको आत्मिक तौर से When देखना your चाहिए। dad calls you, जब आपका पिता आपको बुलाते when your हैं, dad calls you, जब आपके पापा आपको बुलाते and he हैं, says, "Come here," बुलाते हैं आ जाओ, they will tell you, "Mahesh, come here, कहे महेश इधर आओ, come here," or "Ashish, come here." आशीष Your इधर parents आओ। call you, "Come here." Touch me not.
When you touch, छुई मुई के पेड़ जैसे। listen, when you see a father, जब आप पिता को देखते हैं see Father God in him. तो अपने परमेश्वर पिता I को didn't hear उसमें louder देखिए। amen than I heard. Amen। Honor your father and mother. अपने माता पिता का आदर करें All will go well with you. तो सब आपके I'm साथ going भला to say one sentence. एक वाक्य में बोलना Throughout the चाहता हूँ। Bible, पूरी बाइबल में people honored their father. और अपने पिता का लोगों ने आदर किया। I want to make one statement to you. और एक वाक्य मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। Come with me to book of Genesis 49. And if you look in the Bible, for Abraham, Isaac, Jacob, और आप अगर बाइबल में देखेंगे इब्राहिम, इसाक और if you look at याकूब, all three of them, इन तीनों को अगर आप देखेंगे one common thing you see और उनमें एक बात पाई जाती through the है। patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob, the 12 tribes, और आप इब्राहिम, इसाक और याकूब को देखेंगे, इन 12 गोत्रों को, one common thing you see on them. और इनमें एक बात जो है जो समान पाई You know जाती something है। amazing? Listen, look at me. बहुत ध्यान से सुने। Abraham, अब्राहम, Isaac, इसाक Jacob, और याकूब Joseph. और यूसुफ, When you look at all of them, अगर आप इन सबको देखेंगे you never hear the name Holy Spirit there. तो आप कहीं भी पवित्र आत्मा का नाम नहीं देखेंगे। And Holy Spirit came upon Abraham. और कभी नहीं सुना कि पवित्र आत्मा आया Have you heard अब्राहम this? के ऊपर। Holy Spirit came upon Isaac. और इब्राहिम, Holy इसाक Spirit came के- upon Jacob. और याकूब के You ऊपर don't पवित्र hear it. आत्मा You don't. आया। आप- They all went after one thing. और वो सब एक बात के पीछे गए। Especially Isaac, Jacob, patriarchs went after one thing. और इसाक और याकूब एक बात के पीछे गए They went after their father's blessings. और वो अपने पिता की आशीषों के पीछे गए। Amen। To that extent, उतने स्तर तक that Jacob was even willing to cheat his brother to get father's blessing. और याकूब अपने भाई को धोखा देना चाहता था कि वो अपने पिता की आशीष को पा सके। Rebecca said, और रेबेका ने कहा, go cheat your dad, but get your dad's blessing. अपने बाप को तू धोखा दे और उसकी आशीषों को तू पा ले। Arey, why you want your father's blessing? God is there, right? और तुम्हें क्यों चाहिए पिता की आशीष? परमेश्वर है। Why you want father's blessing? तुम्हें क्यों पिता की आशीष चाहिए? If there is nothing in the father's blessing, why did Rebecca say, it's okay, let the curse come upon me, you go and get your dad's blessing? और अगर पिता की आशीष में कुछ नहीं है तो क्यों रेबेका ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे परेशानी हो लेकिन तुम पिता की आशीषों को पाओ। Why did they do that? उन्होंने क्यों ऐसा किया? Why did Esau come back and pleaded with Isaac, please one blessing, father, at least one blessing, father, please bless me, father. Why did Esau plead with Isaac for a blessing? और ईसाऊ क्यों इसहाक से कहता है कि एक आशीष मुझे मिल जाए, एक आशीष अपने पिता की। Isaac said, no, your brother Jacob took away all the blessing. और इसहाक ने कहा कि याकूब ने सारी आशीषों को ले ನನಗೆ लिया। ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪ, ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಅಪ್ಪ, ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪ, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಪ ತಂದ್ರಿ ನನ್ನ ಒಕ್ಕ one blessing daddy, one bless. Why was he pleading? क्यों सिर्फ एक आशीष के लिए वो भीख मांग रहा था? मुझे एक आशीष। If there is nothing, why was he pleading? अगर उस पिता की आशीष में कुछ नहीं तो वो क्यों मांग रहा था? If there is nothing, why did Jacob deceive? अगर कुछ नहीं था तो क्यों याकूब ने धोखा दिया? If there is nothing, why did Rebecca told Jacob to go and deceive your father? अगर उसमें कुछ नहीं था तो रेबेका ने क्यों कहा कि अपने पिता को जाके धोखा दे? There is something in your father's blessings. आपके पिता की आशीष में कुछ है। He didn't understand. I said there is something in your father's blessings. आपके पिता की आशीष में कुछ है। You know what? I'm going to make a statement. एक वाक्य में कहना When I चाहता say father, हूं, जब मैं कहता हूँ पिता, as much as family has a father, जितना एक परिवार का पिता होता है, church also has a father. कलीसिया का भी एक पिता है। यस, आमेन। There is heavenly father, स्वर्गीय पिता है there is natural father, और स्वाभाविक पिता there है, is spiritual father. आत्मिक पिता है। These three are the heads in your life. और ये तीन जो है वो आपके जीवन में सर If you है। walk without head, your body goes everywhere. अगर आप सर के बिना चलेंगे तो आपका शरीर इधर You can उधर make हो out जाएगा। some people without father. They go one day here, they go one day there, like a drunken. Barabar jum sharabi, jum barabar jum. They will tell you, Amesh, chudu, correct nadastutan chudu nenu, steady ga nadastutan chudu, steady, steady, steady. Body, down, down. Why? Head is gone. Gir 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 gir. Look at people like that.
Which church you go to? This Sunday, here. Next Sunday, there. Other Sunday, here. I don't have spiritual fathers. मेरे पास कोई पिता नहीं, आत्मिक पिता नहीं That's है। why look at your life, how your life is. इसलिए अपने जीवन को देखें, आपका जीवन कैसा है। Anybody without a spiritual father, you are like a man whose head is lost the senses. और अगर आपका कोई किसी का स्वर्ग आत्मिक पिता नहीं है तो आपका दिमाग खराब हो So गया। why do you need a father's blessing? आपको क्यों पिता की आशीष You चाहिए? need your earthly father's blessing, or you need your spiritual father's blessing. Two blessings every child of God must get in your life. और हर एक परमेश्वर के बच्चे को स्वर्गीय पिता, Are you आत्मिक ready? पिता की और शारीरिक पिता Are की you ready जरूरत for है। this? क्या आप तैयार I'm हैं? going to make a sentence now. अब एक वाक्य कहना चाहता हूँ। Those who get their earthly father's blessings and spiritual father's blessings, जिन लोगों को इस सांसारिक पिता की आशीष और आत्मिक पिता की आशीष मिलती है, they don't need any prophet in their life. तो उनको अपने जीवन में कोई भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। You didn't hear? Forget it. आमेन। Forget it. I'll repeat again. Those who get their earthly father's blessings, spiritual father blessings, you don't need any prophecy in your life. जिन लोगों को, जिन बच्चों को अपने जीवन में आत्मिक पिता की Why? आशीष, क्यों? Why? Why? क्यों? Your father is your prophet. क्योंकि आपका पिता ही आपका भविष्यवक्ता है। I said your father, your dad, your natural dad is your prophet. Your spiritual dad is your prophet. When you have a natural dad blessing, spiritual dad blessing, you don't need any prophet in your life. अगर आपका शारीरिक पिता की आशीष आपके आत्मिक पिता की आशीष है तो आपको कोई नबी की जरूरत नहीं You है। don't need to run behind any prophet for any prophecy in your life if you have a blessing of your earthly father and a spiritual father in your तो life. आपको किसी भी नबी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है अगर आपके आत्मिक पिता की और शारीरिक पिता की आशीष है। Why do you say this, Pastor? आप क्यों ऐसा कहते हैं Come on, I'll पास्टर? show you scripture. Come with the book of Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक। Now Jacob is old. अब वो बूढ़ा हो गया है। Genesis 49 NIV. Genesis 49 verse 1. उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय और उसका एक पहला वचन। Then Jacob called his sons and said, gather around so I can tell you what will happen to you in the days to come. Who is this? कौन है ये? Was he a prophet? क्या वो नबी है? Who was the father? Who was he? ये Was he a कौन है? prophet? क्या वो नबी है? He was a dad. वो पिता है। Yes, I didn't hear. yes. Yeah. Is he a father or a prophet there? क्या Does वो- it say prophet Jacob? क्या उस यहाँ पे लिखा है कि नबी याकूब? Was he a prophet or was he a father? क्या वो पिता था कि नबी And था? being a father, he tells his son, come gather around me. I can tell you what will happen in your future. और वो पिता होकर ये कह सकता है कि मेरे आसपास हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। What your father says is a prophecy for you. और जो आपका पिता कहता है वो आपके लिए एक नबूवत है। You don't need to go. I'm telling you, HSG, if you go to any prophet asking to prophesy, you missed out the blessing your earthly father has given to you. You missed out the blessing your spiritual father has given to you. और अगर आप HSC हैं तो अगर आप किसी भी नबी के पीछे जाते हैं तो आप उस आशीष को खो देते हैं जो आपके आत्मिक। I don't care how big the prophet is. अब मैं परवाह नहीं करता कितना बड़ा भी नबी If क्यों ना you हो। have your father, earthly father blessing, if you have spiritual father blessing, you don't need any prophet in your life. अगर आपके शारीरिक और आत्मिक पिता की आशीष आपके साथ है तो आपको किसी नबी की जरूरत नहीं है। Why? क्यों? Come with me because I'm a word man. Come on, let me show you the word. Genesis 49, verse 26, NIV. Your father's blessings are greater than the blessings of the ancient mountains. Amen. Now listen carefully. Jacob is talking. याकूब बोल रहा है, What's he talking about? Ancient mountain. तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से See, अधिक। what ancient mountain? Who is the ancient mountains here? Isaac, Abraham. इसाक और अब्राहम। Jacob is telling his children. याकूब अपने बच्चों को कह रहा है, He's telling them, वो कह रहा है the blessing me, your father is giving you,
जो आशीष मैं पिता होने के कारण तुम्हें दे रहा हूँ, it is bigger than the blessing Isaac can give, Abraham can give. और वो उससे कहीं बड़ी है जो इजाक दे सकता है और याकूब दे सकता है। If the father blessing is bigger than Abraham and Isaac's blessing, अगर पिता की आशीष अब्राहम की आशीष से बड़ी हो सकती who है, is a prophet? तो नबी कौन है? Nobody. कोई नहीं। Hindi puts it very nicely. Put sister, read that. तेरे पिता के आशीर्वाद तेरा पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए। मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़कर है. What Jacob is saying is, याकूब क्या कह रहा है? the blessing I give you जो आशीष मैं तुम्हें देता is हूँ, bigger than the blessing Isaac can give, Abraham can give. उससे कहीं बढ़कर है जो इजाक दे सकता है, अब्राहम दे Today सकता I है। want to say, आज मैं कहना the चाहता हूँ, blessing I give you, जो आशीष मैं आपको देता you हूँ, didn't hear, I said the blessing I give you जो आशीष मैं आपको is देता bigger हूँ, than any other man of God can give. The blessing your earthly father can give, the blessing your spiritual father can give is bigger than you name any man of God, any woman of God. Bigger than any other blessing is the blessing of your earthly father and your spiritual father. और जो आपका आत्मिक पिता और शारीरिक पिता की जो आशीष है, वो कोई भी नबी से बढ़कर नहीं, उनकी आशीष सबसे बड़ी इसीलिए है। किसी के पीछे भागने का जरूरत नहीं तुम लोगों को. Amen. You don't need to run behind any prophet in your life. आपको किसी नबी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। When you go to other prophet, you're getting inferior blessing. अगर आप कोई दूसरे नबी के पास जाएंगे तो आपको कम भविष्यवाणी में आशीष मिलेगी, Low quality China mall blessing. और वो कोई उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। China mall blessing. चाइना के माल जैसा But if you है। go to your natural father, अगर आप अपने स्वाभाविक पिता के पास if you go to जाएंगे, spiritual father, अपने आत्मिक पिता के पास get a जाएंगे, blessing. आपको आशीष That is मिलेगी। bigger than any other blessing in your life. वो और कोई आशीष से आपके जीवन में कहीं बड़ी है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Now, Jacob is blessing people. और याकूब लोगों को आशीष दे रहा है, One by one, when he called all the blessings. और सारी आशीषों वो बोलता है, Then he comes to one blessing. और एक आशीष पर आता है। Come with me, book of Genesis 49, verse 8. One day I'm going to teach on the 49th chapter. I'm going to do full series on one day. Okay, verse 8. Now he's blessing Judah. Judah, who is Judah? यहूदा कौन है? Jacob's son, correct? याकूब का पुत्र। I want response from you. Okay. Judah. Now listen carefully. Right now, Jacob was in Egypt. और याकूब जो है वो मिस्र में है, They were shepherds और वो चरवाहे हैं, living in land of Goshen. और गोशन में रह रहे हैं। Yes or no? I want to hear. Right? Okay. Now the shepherd is blessing. अब जो Say with चरवाहा है वो me. आशीष Shepherd दे is blessing his children. और चरवाहा अपने बच्चों को आशीष Say दे with रहा me. है। Shepherd is blessing his children. Shepherd is blessing Okay. his children. Before going there, you know, now Jacob is old. याकूब बूढ़ा हो गया है। Now who is Jacob? कौन है याकूब? Was he a prime minister or a president, or who was he? वो प्रधानमंत्री है या कोई? Who was he? हाँ, father. Okay. He was a father, and what was his profession? Shepherd. He was a Shepherd. shepherd. Okay. Now he becomes old. वो बूढ़ा हो गया His है eyes become dim. और उसकी आंखें नम हो गई हैं। Now, who was Joseph? यूसुफ कौन है? Son. Who was he a shepherd? Who was in Egypt? Prime Minister. Say loudly. Prime Minister. Prime minister. Who was Jacob? याकूब कौन है? Shepherd. चरवाहा। Who was Joseph? यूसुफ कौन I है? repeat again. Who is Jacob? Who is Joseph? Come on, Jorah. Who is Jacob? Shepherd. Kuruba, shepherd. Who is Joseph? Prime Minister, Pradhana Mantri. Now, don't talk spiritually. In the worldly sense, who is in a bigger position? Joseph. Huh? Joseph. Joseph. Okay. Now, come with me. Let's read Genesis 48, verse 11. उत्पत्ति उसका 18वें अध्याय उसका 11 पद। Verse 10. Read verse 10. Now Israel's eyes were failing because of old age. He could hardly see. So Joseph brought his sons close to him. His father kissed them and embraced them. Continue. Israel said to Joseph, I never expected to see your face again. And now God has allowed me to see your children too. Then Joseph removed them from Israel's knees and sat in front of Jacob, putting one leg upon the other leg on the throne.
No. What happened? He bowed down with his face to the ground. Now imagine soldiers come और with, कल्पना with करें Joseph, bodyguards, prime minister's bodyguard, and they see the prime minister bowing down with head to the ground in front of an old shepherd. और वो देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री है एक चरवाहा जो बूढ़ा हो गया है उसके सामने दंडवत कर रहा है. I'm going to touch a point today which will create controversy. I don't mind, okay? और एक बात मैं ऐसी बोलूंगा जो विरोधास्पद है लेकिन कोई बात You नहीं. know the word bow down. और दंडवत करना जो शब्द है The bow down word is the Hebrew word is shaka. और दंडवत करने का हिब्रू मतलब है शाखा. Shaka means to prostrate in homage to royalty. और दंडवत करना का मतलब है कि पूरा अपने आप को नमन करना. That means, दंडवत look at सर me. के बल गिर Show me जाना. on the screen. The prime minister comes, और प्रधानमंत्री आता है bodyguard standing. और उसके सब बॉडीगार्ड आते Prime हैं minister comes in his chariot. और वो अपने रथों पे आता And है there's an old man shepherd sitting there. और एक बूढ़ा जो चरवाहा The वहाँ prime बैठा minister है comes. और प्रधानमंत्री आता है. हालेलुया. Or this. Was it before God? क्या वो Was it doing it to God? क्या वो परमेश्वर Put के the सामने? scripture again. Then Joseph removed them from Israel's knees, bowed down with his face to the ground. Put American standard. Then Joseph took them from his knees and bowed with his face to the ground. In King James Version. Joseph brought them out between his, and he bowed himself with his face to the earth before his father. You know, today, if you go to अगर आप Punjab, पंजाब जाएंगे if you go to Punjab, अगर आप पंजाब the जाएंगे Punjab culture is और पंजाब का संस्कृति they ऐसी do है this to you. वो touch like this. वो आपके पैर छूते हैं. People say, oh, it's worship. और लोग कहते हैं कि आराधना करना है. Show me one verse in the Bible that says that touching somebody's feet is worship. और वचन में आप एक शब्द ऐसा बताएं जहाँ पे ये लिखा है कि दंडवत पैर छूना मतलब दंडवत. You know, in Indian culture, somebody bow down is not worship, respect. और भारतीय संस्कृति में अगर कोई झुक रहा है तो वो उसकी आराधना करना नहीं In है. the वो एक culture आदर- of India, we have this, whether like it or not, Bible is a Eastern book, not a Western book. और अगर आपको पसंद है या नहीं ये पूर्वी किताब है पश्चिमी नहीं. In the Eastern culture, और पूर्वी का जो संस्कृति है including our own great nation of India, और हमारा खुद का भारत का जो देश है bowing down is not worship. Bowing down is respect and honor. और झुकना किसी के सामने वो आराधना करना नहीं है, वो आदर को दर्शाता है. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸಾರೋಣವಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಾರೋಣವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕೇಳಿದವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಸಾರಿದ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಸಾರಿದ ನಂತರ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂದರೆ ಸಾರಿದ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ, ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ
ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಶಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ. ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಕುರುಡ ಕಣ್ಣು ನೋಡಲಿ, ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲುಬುಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣವಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆ ಮಾಯವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಕುಂಗಿದ ಹೃದಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ದುಃಖದಿಂದಿದ್ದಾರೋ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಕರ್ತೇನೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಪ್ಪ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಲಗಳ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಪ್ಪ. ಕತ್ತಲಿರುವ ಕಡೆ ಬೆಳಕುಂಟಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದರ ಕರ್ತನೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸೇವಕರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕರ್ತನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗುಣವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾನೆಲ್, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್.